Everyone, I wish you all are happy and healthy at your home. In my previous class of vocabulary, I had given you more than 15 words. Hope you learned those words and are using in your daily life. So, are you ready for one more story? Yes, story. हाँ बच्चों, मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ. Are you ready for story? So, in this story, there are two doggies. See here, there are two doggies. One doggy is Tommy and the another doggy is Jackie. So, Tommy and Jackie, they both are friends. Now, one day, Tommy lost his bone and he cannot find it. Tommy अपनी bone भूल जाता है कहीं रख के और वो उसे मिल नहीं रही होती है. बहुत कोशिश के बाद जब टॉमी को बोन नहीं मिलती है, he is not getting the bone, then he becomes very upset. बहुत दुखी हो जाता है जब उसे अपनी बोन नहीं मिलती है तो. But Jackie was a friend and Jackie asked him, "What's the matter, Tommy?" Yes, Jackie asked to Tommy. Jackie Tommy से पूछता है कि why are you so upset? Are you looking something else? Then Tommy replied, "My bone. I hid it yesterday. Now I'm not finding it." मैंने कल अपनी बोन कहीं छुपा दी थी and आज मुझे वो नहीं मिल रही है. Then Jackie asked, "Where did you hide it?" तुमने वो बोन कहाँ छुपाई है? Then Tommy said, "Behind my kennel, between the two flower pot." Behind my kennel, between the two flower pots. Kennel is the house of the dogs. Or Tommy said that he hid the bone in between the two pots. एक्चुअली में बच्चों, जैकी को थोड़ी सी मस्ती करने का मूड हो रहा था एंड उसने ही वह बोन किसी दूसरी जगह छुपा दी थी. लेकिन जब उसने देखा कि उसका फ्रेंड बहुत अपसेट है तो उसको उस पर दया आ जाती है एंड ही सेड दैट, "टॉमी, व्हाई डोंट यू लुक अंडर पाइनस कोन?" तुम पाइनस कोन के पास में क्यों नहीं देखते? See students, this is the pinus cone. ये pinus cone है. It is found in hilly areas. The pinus is a tree which is found in the hilly areas. So this is the pinus cone. And Jackie told to Tommy that why didn't you search under the pinus cone? और जैसे ही टॉमी ने pinus cone के अंदर देखा, टॉमी गया और उसने जा करके pinus cone के अंदर देखा and he get the bone. Now, after getting the bone, Tommy was very happy. Now, in this conversation between Tommy and Jackie, you find some words. See, what is the matter, Tommy? What are you looking for? Then he said, "My bone. I hid it yesterday. Now I cannot find it." Here you find some underlined words like behind, between, under. See, behind, between, and the next word is under. Third one, 3 words are here. These words help the two animals to find the bone. Behind, between, under. These words are the words which tell the position of the bone. So, such type of words which tell the position of any object are called preposition. So students, this is our today's topic. Once again, good morning, मेरे प्यारे बच्चों. I Sheila Bhadoria is again with an interesting topic of grammar, that is preposition. So students, along with our daily conversation, preposition is very important in all competitive exams also. So don't take it lightly. Watch video till end. बच्चों, वीडियो को पूरा देखना है बिकॉज एट द एंड देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल. जी हाँ बच्चों, आपके लिए एक सरप्राइज है.
Are you excited for surprise? Yes, tell me, are you excited? Really, there is a surprise for you. So watch the video till end carefully. So let's start proposition with definition. The word which tell us where a person, place, animal or thing is called preposition. कुछ याद आया बच्चों? The name of person, place, animal or thing is called what? Is called noun. Yes, correct. जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं. So prepositions are some words that tell us where something or someone is there. Yes, where. अभी बताया था ना मैंने, where कहाँ है, कोई भी चीज़ कहाँ है. That word, such type of words are known as preposition. Preposition. Yes, preposition. Pre and position. Two words are there in preposition. There are so many prepositions. See here, list of prepositions: to, in, on, by, up, and so many. 18 are there. But oh my god, इतने सारे prepositions. Oh my god, 18. But don't worry, we are not taking all these. So let's start with some easy prepositions. So students, noun, pronoun, verb, adverb पढ़ते पढ़ते अक्सर एक confusion हो जाता है कि what is the preposition, what is the use of it. So if we try to understand with its spelling, then you will never forget it. See here, P-R-E, P-O-S-I-T-I-O-N, position, preposition. It consists of two words. वो वर्ड्स या कनेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? प्रीपोजिशन. यस, द वर्ड विच टेल द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वर्ड in. See in this chart, where is in? Look at here, this is in and this is the preposition screen, suppose, and in is present inside this screen. in जो है इसके अंदर है, preposition screen के अंदर in है. नहीं समझ में आया ना? चलिए कोई बात नहीं. Let's understand this word in with the help of this container. See, this is a container and inside the container there is one spoon. See, this is a spoon and this is the container. Spoon is in the container. Spoon is in the container. Students, the spoon is in the container and the cap is on the container. The cap is on the container. So students, listen once again. See, this is the container and in the container this is the spoon. Spoon is in the container. Spoon container के अंदर है. See, container के अंदर है ना, चारों तरफ से covered है, तो spoon is in the container and this cap, it is on the container. Cap is on the container and spoon is in the container. So again I am explaining here that when any substance is inside in it, when any substance, see here in कहाँ लिखा है बच्चों? preposition sheet के इस preposition screen के अंदर है, बाकी देखिए सारे बाहर हैं, over, into, on, between, सारे इसके बाहर हैं, but in कहाँ है? इसके अंदर. So in कब आएगा? when any substance is covered. See, spoon is covered with this container, so here we use in. और जब कोई चीज
किसी चीज़ के ऊपर सरफेस को टच करती हुई आराम से रखी हुई है, देन वी यूज़ ऑन. What we use here? On. Look at here. See, on is here. On means when any substance is is comfortably sit here. See, the cap is on the container. Now we come to next proposition, that is to and from. Look at here. This see, this is to and this is from. एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाना, टू पास जाना, फ्रॉम वहाँ से आना. तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्केच पेन. कंसिडर दिस एज अ पर्सन एंड सपोज दिस इज अ प्लेस. व्हेन अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स एनी प्लेस, द पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स, then what we will say, suppose this is student and this is school. So student is going to the school. Student is going to school. So to comes when a person is approaching to another. So this way you can say going towards something. Student is going to school. Again, student is going to school. Opposite to is from. The student is coming from the school. See here, suppose this is a student and student is coming from the school. Again, student is coming from the school. Student is going to school. Student is coming from the school. Now the next preposition is below. B-E-L-O-W. Below. Below means नीचे. ये preposition screen के नीचे है. Below. Below is used when the eye level of one object is different with respect to the another object. Now we come to the next preposition, that is between. Look at here, between. See, this is the O and here O is in between P and S. Between means बीच में. P and S के बीच में कौन है? O. So O is in between P and S. So students, to understand other prepositions better, let's do one activity. And कहीं जाना नहीं है because इसके बाद में आपके लिए सरप्राइज है. So stay with us. So students, this is the box and this is the ball. Now we will perform one activity to understand all the prepositions better. So let's start this activity. Here I put this ball. ध्यान से सुनना बच्चों. I put this ball in the box. मैंने इस बॉल को इस बॉक्स में रख दिया. Now the box is, where is box? The ball is in the box. Where is the ball? The ball is in the box. Now when I kept this ball, मैंने इस बॉल को इस बॉक्स के ऊपर रख दिया. Okay? Now what will say? What will come here? The ball is, where is the ball? कहाँ है बॉल? In? No. इन तो तब थी जब बॉक्स के अंदर थी. अभी कहाँ है बच्चों? The ball is on the box. कहाँ है बच्चों? Ball is on the box. Ball बॉक्स के ऊपर है. On the box. Now students, where is the ball? अभी बॉल कहाँ है? ये देखिए. On तो यहाँ था ना.
जब बॉक्स के ऊपर बॉल रखी थी तो ऑन था. नाउ मैंने बॉल को हवा में ऊपर ले लिया एंड देयर इज अ गैप. सी देयर इज अ गैप बिटवीन बॉल एंड बॉक्स. सो वेयर इज द बॉल? कहाँ है बॉल? क्या बोलेंगे? व्हाट कम्स हियर इन दिस फिल इन द ब्लैंक्स? द बॉल इज above. The ball is above the box. What will come here? Above. What comes here? Above. The ball is above the box. What is this? What is here? The ball is on the box. And now it is ball is above the box. The ball is above the box. Now students, सी मैंने इस बॉल को इस बॉक्स के नीचे रख दिया. नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल? व्हाट कम्स हियर? द बॉल इज कहाँ है? बॉक्स के नीचे. नीचे को क्या बोलते हैं? बिलो. द बॉल इज बिलो द बॉक्स. अगेन, बॉल इज बिलो द बॉक्स. जब ऊपर थी तो ऑन द बॉक्स. द बॉल इज ऑन द बॉक्स. द बॉल इज अबव द बॉक्स. द बॉल इज बिलो द बॉक्स. क्लियर? नाउ वेयर इज द बॉल? कहाँ है बॉल? अरे इस बॉक्स के पीछे है बॉल. दिख रही है ना? थोड़ी सी तो दिख ही रही है. चलिए दिखाती हूँ. द बॉल इज क्या आएगा? पीछे को क्या बोलेंगे बच्चों हम? बिहाइंड. द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स. व्हाट कम्स हियर इन द फिल इन द ब्लैंक्स? द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स. जब बॉल इस बॉक्स के पीछे है, देन व्हाट प्रपोजिशन विल कम? बिहाइंड. क्लियर? Now can you tell what is the position of the box right now? ये बॉक्स के बगल में है, साइड में. तो साइड को क्या बोलेंगे? नेक्स्ट टू. द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स. द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स. अब हम इस साइड में रख दें अगर, तो इधर रखी तो भी नेक्स्ट टू होगा. एंड इफ वी विल कैप द बॉल हेयर, अगर हम बॉल को इस साइड में रखते हैं, देन ऑल्सो नेक्स्ट टू. ओके? नाउ कैन यू टेल वेयर इज द बॉल? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल? यस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल राइट नाउ? बॉल इज आगे है. बॉक्स के कहाँ है बच्चों? आगे. पहले पीछे थी बॉल तो बिहाइंड, अभी आगे है बॉल. तो व्हाट word will come? In front of. Look at here. What comes here in the fill in the blanks? The ball is in front of the box. In front of. In front of means आगे. ये बॉक्स है और ये बॉक्स के आगे है. ये देखिए, ऐसे भी हम दिखा सकते हैं. ये बॉक्स है और ये इसके आगे है. ओके? तो I think it's clear to all of you. आगे. ओके? साइड में, दैट इज साइड में क्या था? नेक्स्ट टू. नेक्स्ट टू. हेयर ऑल्सो नेक्स्ट टू. बट बॉक्स के जब आगे है बॉल हेयर, देन इट इज इन फ्रंट ऑफ. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन फ्रंट ऑफ. बॉक्स के आगे क्या आएगा? इन फ्रंट ऑफ. नाउ कैन यू टेल वेयर इज द बॉल? यस, this is the box and this is the pinus cone, and ball is in between box and pinus cone. बॉल जो है वो बॉक्स और पाइनस कोन के कहाँ है बच्चों? बीच में. एंड बीच में के लिए क्या अभी मैंने बताया था आपको? ओ, ध्यान आया आपको? यस. लुक एट हियर अगेन, वंस अगेन. O is in between P and S. So between मतलब बीच में. Here also look at here.
this ball is in between box and pinus cone. So in this fill in the blanks, what comes here? Between. The ball is, मेरे साथ बोलिए सारे बच्चे, the ball is in between the box and pinus cone. So once again, let's revise. First is in, then on, above, below, then behind, next to, in front of, and between. Now I will perform and you just guess what I am doing. Okay, see, what is this? On. The ball is on the box. Yes. In के लिए I have to open it, and this is in. The ball is in the box. Now third one, above. See, above, ऊपर, यहाँ उसके ऊपर रखी हुई है तो on, लेकिन ऊपर है, देखिए गैप है ना. So when the ball is above, ऊपर है, the ball is above the box. Now the ball is below the box. The ball is behind the box. The ball is next to the box. The ball is, अब आप बताइए बच्चों, the ball is in front of the box. Yes, correct. And between, जब यहाँ कोई पाइनस ट्री को रख दें हम तो बीच में बॉल आ जाएगी, then the ball is in between. Students, to understand preposition better, I had made this preposition calendar. See, I had used old calendar stand here, and you can also make this. See how easy it is. In, look at here. This is, suppose this is a ball and this is the container. So the ball is in the container. Okay, the ball is out. This is the sign of out. Next, yes, the ball is on the box. This is the box, suppose, and this is the ball. So on the box. The ball is under. नीचे है ना, देखो ये box है ऊपर और उसके नीचे. So under या below we can say. Now the next is, what is the next? Yes, to and from. To means box की तरफ आना. We can consider it any other thing also. किसी भी चीज के पास आना. That is to, and from यहाँ से दूर जाना. That is from. Okay, so to, from. Next is behind. ये देखो पीछे, ball is behind. पीछे छिप गई ना, देखो आधी दिख रही है. So behind the box. The ball is behind the box. In front of, ये इसके अंदर नहीं है बच्चों, ये आगे है ना. 3D स्ट्रक्चर है. अब आगे तो हम ऐसे रख के दिखा नहीं सकते. This is a 2-dimensional structure. So we can't show it like here. जैसे अभी मैंने आपको बॉल को आगे रख के दिखाया था ना, ऐसे इसे मैंने आपको कैसे दिखाया था कि ये आगे है, बट यहाँ तो हम नहीं दिखा सकते ना, तो हमने उसके अंदर रख दिया है ना. सो इन फ्रंट ऑफ, व्हाट इज हियर? इन फ्रंट ऑफ. वो उसके अंदर नहीं है बच्चों, ये इसके ऊपर है, आगे है. ओके, नेक्स्ट इज बिटवीन. बिटवीन मीन्स बीच में. ये दो बॉक्सेस हैं और उनके बीच में ये बॉल है. सो द बॉल इज इन बिटवीन टू बॉक्सेस. नेक्स्ट टू. नेक्स्ट टू का मीन्स ये बॉक्स है, इसके यहाँ भी अगर हम बॉल रखेंगे दैट देन ऑल्सो वी विल से नेक्स्ट टू, एंड इफ वी विल keep the ball here then also we will say next to. As much as you use these words, it will be more clear where to use them. Practice is must to. So let's do some more activity. Okay, before going to next activity, बच्चों आपको पिज़्ज़ा पसंद है?
हाँ हाँ, खाने वाला पिज़्ज़ा पसंद है कि नहीं? दे नहीं रही हूँ मैं, बट वी आर डूइंग नेक्स्ट एक्टिविटी एंड दैट इज, सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, प्रपोजिशन पिज़्ज़ा। यस, आपका सरप्राइज मुझे याद है, आने वाला है आपका सरप्राइज। प्रपोजिशन पिज़्ज़ा एंड दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पिज़्ज़ा। दिस इज द पिज़्ज़ा बेस, ये पिज़्ज़ा बेस है, एंड दीज आर द स्लाइसेस ऑफ द पिज़्ज़ा। नाउ you have to help in making this proposition pizza. How you can help? You just tell me where I have to put these slices. See, first one, see this box, in this ball, the ball, suppose this is a ball and the ball is in the box. So which slice will come here? In, this one will come here. So let's arrange. In will come here. Okay, see here, look at here, the ball is in between the two boxes, so we will arrange this slide here between. Okay, बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया था, what I have explained you, that कोई चीज या बॉल बॉक्स के ऊपर टच करती हुई है, देन व्हाट वी विल पुट हियर? ऑन, एंड बॉक्स एंड बॉल के बीच में गैप है, हवा में है बॉल, देन इट इज अबव, सो वी विल पुट द स्लाइसेस हियर. व्हाट कम्स हियर? विच स्लाइस विल कम हियर? ऑन. The on slice will come here and above slice will come there. So in this way your preparation pizza is ready, and this is your surprise. See, this is the preparation pizza and this is for you. Your pizza is ready, and see how beautiful it is, and you all had made it, and this is more than surprise. This is the surprise for you, how beautiful it is. Okay, so I think you all might have understood all the prepositions which are the ingredient of this preposition pizza. Now it's time for evaluation. Let me check whether you understand or not. So before going to check you students, I want to introduce one new character, that is Chicky. See, this is Chicky. Chicky is saying hi. From your side students, I am saying hi to Chicky. How are you? I am fine and happy. Okay. Now let's play a hide and seek game with Chicky. So let's start the game. It's chance for Chicky to hide, and Chicky is very naughty. See, we have to search where Chicky is. So see here, where is Chicky? Can you guess? Yes, so can you guess where is Chicky? Chicky, I think Chicky is behind this bush. कहाँ है Chicky? See, this is Chicky, and ये जो झाड़ी है, bush है, इसके पीछे है. So what we will say here? What we will say? Behind. Behind means पीछे. So first one is, where is Chicky? Behind a bush. Behind a bush. Now second one, where is Chicky right now? Chicky is कहाँ है? बेंच के ऊपर. ऊपर को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? बताइए. On the bench. So Chicky is on a bench. Now where is Chicky? Where is Chicky? In front of, वो जो दो बच्चे खड़े हुए ना, एक का नाम है सिमरन and another boy's name is आदर्श. So Chicky is in front of, उनके आगे है Chicky. देखिए उनका फेस उस साइड में है ना. So Chicky is in front of Adarsh and Simran. So see here. Yes, we are correct. चिक्की, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं.
Yeah. Now fourth one. Where is Chicky? Can you guess? Yeah. Inside the box. Very simple. So Chicky is inside the box. Similarly, you can easily guess where is Chicky? Under a chair. Chicky कहाँ है ये देखो, चेयर के नीचे, अंडर अ चेयर. नाउ वेयर इज चिक्की? चिक्की इज नियर हर मदर. अपनी मम्मा के पास में है चिक्की. सो चिक्की, हमने आपको पहचान लिया. नाउ इट्स आवर चांस. आपको हमें ढूंढना है. आई थिंक स्टूडेंट्स यू एंजॉयड दिस हाइड एंड सीक गेम. क्या आपको एक और गेम खेलना है? चलिए चलिए खेलते हैं. लेट्स प्ले वन मोर गेम. Let's play another game with Perry. See how beautiful it is. Wow, colorful and saying hi to you all. Okay, hello Perry. So let's play with Perry. And Perry is also very naughty, always moving here and there. But no doubt हमारे बच्चे आपसे बहुत intelligent हैं. Yes, so in this you have to choose the correct preposition. First one is Perry is behind या on the chair. पैरी कहाँ है? देखो बेटा कहाँ है? कहाँ है बच्चों? चेयर के ऊपर बैठा है पैरी. सो behind मीन्स तो पीछे होता है and on मीन्स ऊपर. तो पैरी is on the chair. We have to tick here. So we have to tick which option? On. So Perry is on the chair. We have to tick here correct preposition. Perry is on the chair. Here, where is the Perry? He is hiding near or under. What will come? Near आएगा कि under? Near means पास में. Under means blanket के अंदर है. So under will come. He is hiding under the blanket. Now here what will come? Yes, come on. He is between या on. What will come? The doll and the teddy. This is the doll and this is the teddy. So Perry is in between doll and teddy. Perry is in between. Now next. Perry is under or behind. What will come? The door. See, look at here. Perry है. See, this is the Perry. And Perry डोर के behind है, पीछे है कि डोर के नीचे है? Under means उसके नीचे. तो कहाँ है बच्चों? Perry is behind the door. Correct. See, students. बच्चों ये क्या है? This is the class. Yes, teacher is teaching. And how many students are there? Let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 students are sitting in the class. And teacher, she is wearing a beautiful green dress, having red book. And she is teaching. What she is teaching? Let me in on. अरे ये तो preposition पढ़ा रही हैं. So ma'am is teaching preposition here. So this is the class. And see, this is Varun, this is Donna, this is Ritu, and ये curly hairs वाला कौन है? Seth. Again look here. Varun is writing something, and Ritu कहाँ बैठी है? Donna and Seth के बीच में. ध्यान रखना. Okay. And okay. So let's do one exercise based on this class. Now here you have to fill these words by choosing the words written above, and these sentences are based on the this class which I had explained you. First, the children are dash the classroom. Children कहाँ हैं? Classroom के कहाँ हैं? Let's see. इन फ्रंट ऑफ, क्लास के सामने नहीं, इन अंदर, क्लास के अंदर हैं. यस, सही तो है. द चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम. सो फर्स्ट में व्हाट विल कम? इन.
Now second, there is a blackboard. Blackboard कहाँ है बच्चों? ये blackboard कहाँ है? On the wall. The blackboard is on the wall. Third one is Varun is writing. See, this is the Varun. I had told you earlier that Varun is writing something. So Varun is writing. कहाँ लिख रहा है वो? In his notebook. What comes here? In. अपनी नोटबुक के अंदर लिख रहा है. So Varun is writing in his notebook. Now fourth one, Ritu is sitting. Ritu is sitting. See, where is Ritu? See, this is the Ritu, and Ritu is sitting dash Varun. Varun कहाँ है? ये है Varun. तो Ritu Varun के कहाँ है बच्चों? कहाँ है? देखिए, आगे है क्या? No, पीछे है. Ritu is sitting. पीछे को क्या बोलते हैं? Between. नहीं, behind. क्या बोलते हैं बच्चों? Behind. Ritu is sitting behind Varun. Clear? Now let's come to the fifth one. Ritu is sitting. Ritu जो है वो Donna and Saif dash Donna and Saif. Donna और Saif के कहाँ है रितु? बताइए कहाँ है? बीच में. बिल्कुल सही. So बीच में के लिए what preposition will come? Between. Ritu is sitting between Donna and Saif. Now the sixth fill up is the teacher is standing. Where teacher is standing? In the class. The teacher is standing in the class. So students, right now only these out of all these prepositions, only these 8 prepositions are in your standard right now, and later you will learn in higher classes. So let's revise. You have learned the use of these 8 prepositions: in, on, above, below, behind, next to, in front of, and between. So keep practicing these prepositions in your daily life so that you may get more familiar about them and their uses. And thank you so much for watching, and have a good day, students. Bye bye.